Hello children. In this video, we will learn about Haute Couture. So this is part of chapter 3.1 of class 12 fashion studies book. So what exactly is Haute Couture? Haute Couture is a French term for high fashion. You learn this in grade 11 also. So what exactly is high fashion? High fashion is a designer wear fashion or garment that is developed in a design house by a designer and his team, and it is made as per the measurement of an individual. So एक क्लाइंट होता है उनका, वो उसकी मेजरमेंट पे वर्क करते हैं और ये इंडिविजुअल मेजरमेंट पे गारमेंट बनता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सक्लूसिव गारमेंट होता है because as per the requirement of the customer, they develop this particular garment. So depending upon the height of the customer, the shape of the body of the customer, the complexion of the customer, the hairstyle of the customer, the shape of their face, वो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वो कॉस्ट्यूम्स उनके लिए डिजाइन करते हैं. So what exactly is haute couture? Haute couture producers are the established design houses that make very expensive garments customized for individual customers. So very expensive क्यों होते हैं? Because वो one of a kind garment होता है. एक client के लिए बना रहे हैं. So if Manish Malhotra is developing a costume for Kareena Kapoor, so it would be expensive because it is just one of a costume that's developed exclusively for Karishma Kapoor or Kareena Kapoor or any other XYZ personality. अब अगर वो डिजाइनर कहता है कि मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा नहीं बनाऊंगा इस कॉस्ट्यूम को, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा हो जाती है कस्टमर के लिए, उसके क्लाइंट के लिए. तो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं. आई शुड से द नीश मार्केट ऑफ द सोसाइटी, दे आर देयर क्लाइंट्स. कस्टमाइज्ड गारमेंट्स होते हैं बिकॉज वो इंडिविजुअल की जो क्लाइंट है उसकी मेजरमेंट को देख के बनाए जाते हैं. So इसीलिए not just the workmanship is good, not just the design is very creative and innovative, but it is just exclusive garment that is developed for one individual customer. That is why the cost goes high. So it is important to understand this particular segment. So let us now move further to explain, to understand this in detail. So आगे और समझते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को. फैशन लीडरशिप in customized fine dressmaking started with a small group of fashion designers or producers from France. And that is why जितनी भी आप टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखोगे वो फ्रेंच टर्म्स हैं, बिकॉज फ्रांस को एक फैशन कैपिटल, द वेरी फर्स्ट फैशन कैपिटल भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले फैशन एक्सक्लूसिव डिजाइन बनने शुरू हुए और आई शुड से कि वो पॉपुलर भी होने लगे. सो जो टर्म इधर है वो है couturiers. Couturier is a French term or a word for high quality dressmaking or high fashion. तो एक क्वेश्चन जो आपके लिए जरूर आ सकता है, and that is define the term haute couture, and the second is what does the term couturier mean. So now here you have couturier is a French word for high quality dressmaking or high fashion. Now it is the creation of exclusive custom fitted clothing. This is what we discussed in the previous slide also. So it is one of a costume that's developed for an individual as per his or her demand or requirement in respect to design and their body measurements too. Now, because France became the hub of fashion, a fashion capital, तो अब जो डिजाइनर्स थे उनका नंबर भी इंक्रीज होने लग गया. एंड दैट इज वाई जो टॉप मोस्ट डिजाइनर्स थे उन्होंने मिलके और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलके एक ट्रेड एसोसिएशन बनाई. और ट्रेड एसोसिएशन का पर्पस ये था कि अब जो डिजाइनर्स हैं वो उसमें एक पैरामीटर को, एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे तभी वो डिजाइनर कहलाएंगे, right? So when the number of haute couture designers grew, a trade association was formed to determine the qualifications of a couture house and to deal with their common interest.
So what was the name of that one very first of a kind of association that was formed? The name was La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. और ये डेवलप करी थी, एस्टेब्लिश करी थी 1868 में. And the membership of this particular association, trade association, was limited to couturiers जो fulfill करेंगे कुछ particular qualifications. So now let us just go through what kind of qualifications they need to fulfill to be part of it. So now we have La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, and it was, as we discussed, established in 1868. तो सबसे पहला जो इनका गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन वाज कि they wanted to control the time period or the schedule of fashion shows, so such that they can plan for the fashion weeks and the fashion shows, और किसी भी डिजाइनर की जो है कोइंसाइड नहीं करे दूसरे डिजाइनर के शो के साथ में. Originality was the issue here because they wanted कि सबके जो गारमेंट्स है ओरिजिनल हो, कोई किसी की कॉपीड वर्जन्स को नहीं शोकेस करे. बिकॉज एक ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने नोटिस करी थी कि बहुत लोग दूसरों के जो डिज़ाइंस थे उनको कॉपी करके अपने जो है शो में प्रेजेंट कर देते थे, उस डिज़ाइनर से पहले प्रेजेंट कर देते थे. तो यू नो that this designer was called as a very creative designer, but जो डिजाइनर इतने टाइम से काम कर रहा था उस पे रेंज पे, that person had to undergo a lot of losses because of that. And then was the shipping dates, as in अगर shipping dates को नहीं follow किया तो it would be a problem, because ultimately it is going to affect or tarnish the image of their country in front of others. So they wanted to control all these things. So members, very first thing what was required was, और ये question board में आ चुका है. So what are the things that they tried to control? One was members are required to abide by a set of rules laid down by the chamber to control the schedules of fashion shows, issues of originality, shipping dates, and so on. Second क्या था कि it is not important कि that you have to be a French national to be part of that particular chamber. So कोई भी हमारी country से भी उसका एक पार्ट हो सकता है अगर वो फुलफिल करता है उनकी बाकी रिक्वायरमेंट्स को. So French nationality is not a qualification for membership to the chamber. Originality is important, right? Then is several couturiers in Paris are not French. तो ये सेकेंड पॉइंट को ही मैच करता है. इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन टू दैट. एंड द लास्ट वन इज जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अबाउट एन इंडियन डिजाइनर हु इज अ मेंबर ऑफ दिस चेंबर, and the name of this designer is Manish Arora, one of my favorite designers, because इनकी जो डिजाइन है वो इतने quirky है, इतने awesome है, इतने creative है, that once you start looking up to the designs that the designer develops, आपको मजा आ जाएगा देख के, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा from his collection. So he is a pride of our country as he is one of the member of this chamber, that is La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Please do not forget, एक ये चेंबर है और एक और है जो हम आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. And this designer has also participated in Paris Fashion Week. Then next is members show their exclusive collection twice a year. So क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं मेंबर्स से कि वो साल में 2 बारी अपनी कलेक्शन को शोकेस करें. अब वो कब कब करें? एक बारी जनवरी में और दूसरी बारी जुलाई में. जो जनवरी में शो होगा उसको वो स्प्रिंग समर बोलते हैं, बिकॉज हमेशा ये जो कलेक्शन है ये सीजन से पहले आती है. सो जनवरी में नॉर्मली हम लोग लेंगे कि विंटर्स है तो विंटर कलेक्शन होनी चाहिए, नहीं, हमेशा सीजन से पहले कलेक्शन आती है. सो स्प्रिंग से पहले, समर से पहले जनवरी में आपकी ये कलेक्शन आती है जो स्प्रिंग समर कलेक्शन होती है. ऐसे ही जुलाई में जब आपकी समर्स होती है तब ये आपकी कलेक्शन आती है, दैट इज ऑटम विंटर.
सो ऑटम स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ऑटम विंटर कलेक्शन आती है. सो दिस इज अनदर qualification or a requirement to be a part of this particular chamber. ठीक है. Next is Paris Haute Couture continues to hold its preeminent position as an industry unto itself, not as profitable as pret-a-porter, that is ready to wear, but very important from the prestige point of view. And even today, इतने साल हो गए शुरू से पेरिस हैज बीन नंबर वन. और आज भी अगर आप देखोगे तो डिजाइनर्स जो है, दे लव टू be part of the chamber. They love to participate in the Paris Fashion Week because वो एक designer का एक dream होता है to be invited or given a chance to participate in the fashion weeks in France. Now after France, let us move to Italy. अब एक तो ये चेंबर आपका बन गया फ्रांस में. अब दूसरा ट्रेड एसोसिएशन जो बना था वो था इटली में. सो इटालियन कुतूर वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू along the same lines as Paris, but on a much smaller scale. पेरिस में तो बहुत पहले से 1800 से आपका फैशन वाज बूमिंग लाइक एनीथिंग, बट इटली में ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इट स्टार्टेड पिकिंग अप, बट बहुत ही स्मॉल स्केल पे, बिकॉज मार्केट बहुत छोटी थी as far as the designs are concerned, as far as the demand is concerned, I would say. The Italian counterpart of the governing organization is the Camera Nazionale dell'Alta Moda Italiana. So this is the organization, trade organization that was formed as a counterpart of the Paris one. Okay, so ये दो trade associations है जो अगेन एग्जाम में आ चुकी हैं, पूछ चुके हैं. सो एक फ्रांस की है जो हमने पहले करी, और ये इटली की है. The Italian houses are not congregated in a single city but are located in 3 cities. And which are the 3 cities in Italy जहाँ पे ये आपकी Italian design houses located है? वो है रोम, फ्लोरेंस और मिलान. ये 3 जगह हैं इटली में जहाँ पर ये located है. The experience of the Italian couture has been similar to that of Paris. As couture prices are prohibitively high for most potential customers, this has resulted in a dwindling clientele and largely unprofitable couture operations. Because couture के जो garments होते हैं वो काफी expensive होते हैं, so obviously उनका जो clientele है बहुत कम है. Number of customers buying the products from them is very low, and that is why जो profits है इनके वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं अगर proper sales, timely sales नहीं हो, if they don't have a good clientele with them. A substantial share of the income of these design houses comes from ready-to-wear sections, franchised boutiques, and the licensing fee from perfumes, accessories, and other goods to which the designer name adds prestige. So it is not just the designer house, uska couture collection जो उसको सबसे ज्यादा अर्निंग देता है, बट उसकी जगह क्या होता है, जो उसकी रेडी टू वेयर कलेक्शन होती है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स पे डिजाइनर डेवलप करता है, वो कलेक्शन उसको हेल्प करती है इन ड्रॉइंग प्रॉफिट्स. देन डिजाइनर्स मेनी अ टाइम्स दे हैव देयर ओन बुटीक्स, एंड कई बारी वो फ्रेंचाइजीज को अपनी बुटीक की राइट्स दे देते हैं, तो वहां से उनको फीस मिलती है. फिर लाइसेंसिंग फीस होती है, उनके कुछ कुछ एक्सेसरीज या प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन पे कि ब्रांड्स दे वांट कि एक पर्टिकुलर डिजाइनर का उस पे एक लेबल या उसका लोगो प्लेस हो जाए, एंड फॉर दैट दिस पर्टिकुलर ब्रांड इट गिव्स लाइसेंसिंग फी टू द डिजाइनर. तो डिजाइनर्स को वहां से भी अच्छी इनकम जनरेट होती है. So these are the sources which help a designer to sustain, right, for a longer time period. And if a designer is able to sustain for a longer time period, तो obviously उसका clientele धीरे धीरे ही बढ़ता है. It's not a magic that happens in just one day. So once they get this, income through various sources, they are able to invest in other places as well. That helps them sustain.
Now, the exclusivity in this particular area is because of the exclusiveness of the design and workmanship. Okay, so that is why the price goes high. बट अब जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए कोई चीज जो इजीली एक्सेसिबल हो, आराम से जाए मार्केट में जाके खरीद ले, उसको सेटिस्फैक्शन मिले कि मुझे एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिला, एक अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट मिला और वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिला. सो दैट इज व्हाट द कस्टमर वांट्स. And because of this mindset of the customer, designers had to think beyond haute couture. And that is where we have the next uh, area or the category of clothing, that is high end or the designer wear, ready to wear brands. So अब जो next video आएगी मेरी, that will talk about the next category, that is ready to wear collection that is made by the designer labels. Because obviously they want to sustain, they want to stay in the market and run their business and earn profits. So that is going to happen only when they enter into the next segment as well. तो उसमें जब हम वो डिस्कस करेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से डिजाइनर्स ने फ्रॉम haute couture they have also started their ready to wear collection. So thanks for watching the video, and please do not forget to like, share and subscribe to this particular channel. Thank you.